start with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum dear students, you have to remember that numbers are the highest degree of knowledge. We start our today's topic, which is named as theorems related with area. Here we discuss some important theorems which are related with the area of parallelograms and triangles. In the previous lecture we have studied that parallelogram is a four-sided shape where opposite sides are parallel and equal in length. We can also define it as a quadrilateral that has two pairs of parallel sides is called parallelogram. एक ऐसी four-sided shape जिसकी opposite sides parallel हो और length में भी equal हो, then we can say this is a parallelogram. We also have discussed that triangle is a three-sided shape and there are also three angles in a triangle and the sum of these three angles must be equal to 180 degree. We also have learned that sum of any two sides of a triangle must be greater than the third side. Here we solve some theorems which are related to the area of triangle. In the third theorem of unit number 16, we have to prove that triangles on the same base and of same altitudes are equal in area. Two triangles ABC and DBC you can see on your screen. अगर इन triangles की bases same हो, both these triangles have the same base which is equal to BC और इनकी height भी same हो, तो हमने प्रूव करना है कि दोनों triangles का area भी same है. Firstly, we will write what is given in this question. Triangles ABC and DBC on the same base BC and having equal altitudes. हमें ये given है कि two triangles हैं ABC and DBC. इन दोनों triangles की base same है which is equal to BC और इन दोनों triangles की height भी same है. We have to prove that area of triangle ABC equal to area of triangle DBC. For this we will do some constructions. Draw BM which is parallel to CA. It means that BM and CA are two lines which will never meet at any point. And CN is parallel to BD, meeting AD which is produced in MN. We will prove it by writing some statements and the reason of each statement. Firstly, we will write triangle ABC and triangle DBC are between the same parallel. We can write it because the height of both these triangles ABC and DBC are equal and MADN is a line which is parallel to BC. We can write this line because these parallelograms are on the same base BC and between the same parallelogram. And area of parallelogram BCAM equal to area of parallelogram BCND. This is our first equation. We can write this equation because each diagonal of a parallelogram bisects it into two congruent triangles. But the area of triangle ABC equal to half of the area of parallelogram BCAM. This is our second equation. And area of triangle DBC equal to half of the area of parallelogram BCND. This is our third equation. By using equation number 1, 2 and 3, we can say area of triangle ABC equal to area of triangle DBC. Now we have to solve theorem number 4 from unit number 16, which states that triangles on the equal bases and of equal altitudes are equal in area. ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी बेसिस इक्वल हो, हम सपोज करते हैं हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DEF. इन दोनों ट्राइंगल्स की बेसिस इक्वल हैं. द बेस ऑफ ट्राइंगल ABC इज BC एंड बेस ऑफ ट्राइंगल DEF इज EF. हम सपोज करते हैं BC इज इक्वल टू EF एंड ऑफ इक्वल आल्टीट्यूड्स. इन दोनों ट्राइंगल की हाइट भी अगर इक्वल हो, then we have to prove that both these triangles are equal in area. Firstly, we will write what is given. Triangles ABC and DEF on the equal basis BC and EF. दो ट्राइंगल्स हमें दी गई हैं ABC और DEF. इन दोनों ट्राइंगल्स की बेसिस इक्वल हैं, सो वी कैन से BC इक्वल टू EF
एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स। इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट भी इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। हमने ये प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हैं। फॉर दिस वी विल डू सम कंस्ट्रक्शंस। Place the triangles ABC and DEF so that their equal bases BC and EF are in the same straight line। हमने दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे प्लेस करना है कि इनकी बेसिस एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाए। एंड वी कैन से दिस लाइन इज़ BCEF एंड देयर वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट। और दोनों ट्राइंगल्स के वर्टिसेस भी सेम साइड पे ही हैं। Draw BX which is parallel to CA and FY parallel to ED, meeting ED which is produced in X and Y. We will solve it by writing some statements and the reason of each statement. सबसे पहले हम राइट करेंगे ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल DEF are between the same parallel. We can write this because their heights are equal. दोनों ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल है, इसलिए हम ये लाइन राइट कर सकते हैं। एंड XADY इज़ अ पैरेलल लाइन टू BCEF। XADY और BCEF दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYD। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। वी कैन राइट दिस इक्वेशन बिकॉज these parallelograms are on the equal basis. But the area of triangle ABC equal to half of the area of parallelogram BCAX. This is our second equation and we can write this equation because diagonal of a parallelogram bisects it. And area of triangle DEF equal to half of the area of parallelogram EFYD. This is our third equation. From equation number 1, 2 and 3 we can say area of triangle ABC equal to area of triangle DEF. Now you have to do these theorems. इन थ्योरम्स को प्रूव करने के बाद आप इजीली बता सकते हैं कि किन ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हो सकते हैं और किन पैरेललोग्राम्स के एरियाज आपस में इक्वल हो सकते हैं। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस टाइम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।